Assalamualaikum, welcome back to my channel. So this video is going to be a little different, थोड़ी unedited, थोड़ी raw सी. वीडियो में I'm going to talk about keeping off season clothes और वो कपड़े जो आप अपने दूसरे बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनको किस तरह रख सकते हैं. So let's just get on with the video. बेसिकली जब से हमने मूव किया है एवरीथिंग इज़ जस्ट ऑल ओवर द प्लेस. Winters in Pakistan are like for 3 to 4 months, that's it. So ज़्यादा यहाँ गर्मियाँ होती हैं which is for like 8 to 9 months. These organizers are really nice और ये 8 to 10 का सेट लिया था मैंने. There was this lady who was making them. This is made up of silk और एम्ब्रॉयडरी हुई है ऊपर इसके. अब ये इतने ही कोई मजबूत हैं, मैं काफ़ी कपड़े इसमें रख देती हूँ. So this is very nice. So going to separate all the baby clothes. इसमें से जो देने के हैं और जो रखने के हैं वो अलग अलग करेंगे. जो warm clothes हैं वो I'm going to take out for winters here. Clothes मैं अलग कर दूँगी जो अब fit नहीं होंगे और I will keep it away. The other pile is going to be of the clothes जो आप वापस पहन सकते हैं and I will take it out in March. Organizer मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. I am going to keep all the summer clothes in. So in this box I'm just going to keep all the baby clothes that we have and वो अभी अच्छी condition में है, so just keeping those. क्लोथ्स में वही रखती हूँ जो रीयूज़ हो सकें, जो बहुत अच्छी कंडीशन में हो, like caps, socks, rompers, t-shirts और even wrapping sheets. अच्छा, and then there are those clothes जो white होते हैं and yellow stained हो जाते हैं over the time. तो उन पे येलो निशान आ जाते हैं. It's better you keep it in sunlight for one day कि उनको थोड़ी धूप लगे and then just wash it with washing powder और थोड़ा सा bleach लेके you just rub it और ये clean हो जाता है. Keep these clothes for later use. अगर किसी को family में किसी का baby हो and they need it, so I give it to them or maybe whenever I have a baby. So as you can see इसके अंदर काफ़ी चीज़ें fit हो जाती हैं. थोड़ा सा मुश्किल होगा बंद करने के लिए. Another organizer with a lid. इसको मैंने अपने क्लोजेट में ही रखना है because this will be soon taken out. तो इसके अंदर मैं सारे वो कपड़े रख रही हूँ जो काफ़ी मोटे हैं and those will be needed a little later, मतलब after 2 weeks something. So yeah, I'm gonna use it like that. Actually organizing everything, the first rule is to empty everything you have. तो मैं एक एक करके सबको खाली करती जा रही हूँ because I've just dumped it in. अब सारे वो कपड़े हैं जो I have to put away in the storage because अब ये पहने नहीं जाएंगे. These belong to my elder son and these are too big for my younger son for now, so I'm just going to keep it away. Last thing I did was label them. जितना भी 0 to 12 या 0 to 24 months वाला जितने भी सामान है winter and summer, I put it away in the storage because अब वो यूज़ नहीं आएंगे. हाँ, but 2 years से लेकर 6 years तक I kept it close to my wardrobe because वो easily available, accessible होते हैं और उससे ये होगा कि मुझे भी पता होगा क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है and every month I can take that out easily and it will be easier कि मैं check कर सकूँ कि whatever is fitting and whatever is not.
another transparent packet that I'm going to use for keeping all the shots जो अभी यूज़ में नहीं आ रही एंड छोटी हो गई हैं. So I will keep it away for my younger son for later. एक और क्लॉथ बैग मेरे पास था जिसमें आई एम गोइंग टू कीप ऑल द बेबी शूज़ दैट आई हैड और बेबी सॉक्स दैट वर लेफ्ट. तो ये भी अच्छी क्वालिटी थी इनकी और अच्छी कंडीशन में है. आई एम गोइंग टू कीप दीज. पसंद आई ये वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक एंड बाय बाय.